I was literally away from like making videos myself for a while. तो ये अब दोबारा जब कोरोना के अंदर सारा कुछ रुक गया, so I was like, let's start it again. And plus, like way too many live videos. तो मैं थोड़ा अपने I wanted to stick to my podcasts because I think they're generally more calm and they're not like comments वगैरह हर वक्त आ रहे होते हैं and stuff. So this is much better. But ये yeah, बुद्धि like, साजिश लोग मिल गए. Like I'm trying to get Nadeem Farooq Paracha for a podcast, so that'll be cool if I can that would get be that. really cool. Yeah, so That I'm would be trying. really cool. So supposedly he's free on Saturday, but I don't know. So that'll be cool. So इस तरह के लोगों के पास I guess थोड़ा time वगैरह बंदा कर सकता है, वो काफी फिट सीन होगा. That would be. So इस तरह की चीजें कर रहे हैं. You guys tell me यार, what's up? What's going on? What's going on with Bayan? What's going on with you guys? How are you handling shiz? And by the way, like इस बार मुझे यार कुछ तरह दो, मुझे dirt दो. Like by the way recorded है, तो मैं कोई तुमसे गुस्सा नहीं कह रहा. तो मुझे dirt दो, Pepsi के बारे में दो, Coke के बारे में दो, Nescafe basement के बारे में दो, सब चीजों के बारे में propaganda viral कर देगा. यार डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ Do your पाकिस्तान के बारे में podcast. bitching कर सकते हैं. यार मैंने किया है अभी, so मैंने अभी वो Yeah, रत्ना no, के yeah, no. This was just a reference literally to that. Oh, did you see it? Yeah, I didn't get a chance to like go through all of it, लेकिन मैं थोड़ा सा skip करके देख रहा था. I was like, ओए, debaters के ले रहे हैं, that's random, but okay. No, because he wrote an article ना 2 years ago कि कैसे जो आपका डिबेटिंग सोसाइटी है जिसमें उर्दू डिबेटर्स के खिलाफ, मतलब उर्दू डिबेटर्स को काफी डिच किया जाता है, जो फैक्ट है, लाइक let's be honest, त्यारती का भी होती है. Was that the one you put up on Facebook like a couple of years ago? Yeah. Maybe जब like a decade ago when I was in school, अगर किसी बंदे की अंग्रेजी अच्छी नहीं होती थी तो it was like a very funny thing, look at the pendu, blah 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 blah, and it's not, unfortunately it's not too different now either. अंग्रेजी अच्छी ना बोलना is not a sign of anybody's inferiority as much as it is a sign of they receive different opportunities from me. Team from GC came to I was co-seeing with 2 other people. So the team from GC came to us with a complaint, but unfortunately, the way the complaint was presented, it didn't sound like a specific complaint जिसके बारे में मैं कुछ कर सकता था. It was कि जब हम mispronounce करते हैं, we can tell कि other teams find it funny. Yeah. And they were unhappy with the sort of adjudication speech that was given to them after one debate. So I spoke to them at length about it, and मेरा ultimately ये था कि if you can give me something जिसमें मैं कुछ actionable कर सकूं, कोई individual जिसने exact चीज की हो which violates like the rules in some fashion or the other, मैं जाके उनकी ऐसी की तैसी कर दूं, उन्हें penalize कर दूं in some way. But I mean, in a tournament in which grasp of rhetoric and the English language and presentation in English language is unfortunately a prerequisite, it is an unfortunate handicap. Just like मेरे लिए handicap होगा अगर मैं एक उर्दू parliamentary debating tournament में चला जाऊं, क्योंकि मेरी उर्दू debating skills are crap. And fair point. These guys would find it hilarious कि ये पोपट बर्गर बच्चा के हमारे sort of domain में अपने he's making a fool of himself. So मैं ये कह रहा था कि I mean it sucks that there's this sort of toxic elitism about the thing, but I can't go to like an individual and किसी के दिल की भड़ास निकाल दूं उसे एक individual पे. So like I mean, and of course in retrospect, probably 2 or 3 things that we could have done better that didn't cross my mind at the time. Limited and restrictive parliamentary debates and debates का फायदा है in a country of 220 million people जिसमें से 60% अपना नाम लिख नहीं सकते और आप अंग्रेजी में parliamentary debate से पैसे लगा रहे हैं. It is a private school English medium hobby. Okay, that was the main concern. Okay, the elitism in it, No, absolutely. A general inequality, and I think that's a valid concern. It absolutely is. Urdu debates have always been sort of almost like private schools are ashamed that Urdu debates is also a thing, and they're treated like crap. It's stupid.
Yeah, Wait, so you guys are talking about Urdu, yaar. Just you, I'm sure both of you are aware कि पंजाबी को कितना वो मिस करा पंजाबी दिया तो यार वो तो बेचारे मतलब वो तो they don't even एक और ही गेम है. like I you would be know. really interested in a Punjabi declamation competition. I would love it. Like honestly, बहुत मजा आया Next यार. level एक होता. कॉमेडी पंजाबी मतलब ह्यूमरस राउंड का डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट will be a hit. Yeah, man, absolutely. Yep. You और know? I think करना भी चाहिए, even if it's not a hit, even if it's kind of funny and awkward. I think करना चाहिए But because like, otherwise can you it's like कि language extinction की तरफ जा रही है. you सही know है. यार so can you imagine कि like LGS like हमारे टाइम पे LGS डिफेंस में एक पंजाबी डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हो रहा होता like a humorous पंजाबी डेक्लेमेशन and why not? यार कंपटीशन छोड़ो, मतलब अगर प्रॉपर्ली पढ़ा रहे होते वो भी काफी बेहतर होता. लाइक आई एम हाँ. फ्रॉम एट्थ इन कॉलेज, और हमारे केस में तो मतलब पंजाबी वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन. हमें कभी पढ़ाया नहीं गया, और उर्दू पढ़ा दी वो बड़ी बात है, लाइक इन हाइंडसाइट राइट नाउ. I'm curious क्या पंजाबी की किधर मिलते हैं क्या होता like एग्जाम्स का स्ट्रक्चर like किधर अवेलेबल होता है कहीं होता है I'm sure हाँ कहीं हाँ, तो होता होगा. pretty sure ओ और ए लेवल्स में पंजाबी एज अ सब्जेक्ट होता है. क्या वो मैंडेटरी है, वो ऐसा Check सीन it है. out. I'm going to Google this. Yeah, I was going to say. यार वो कौन सा स्कूल था? I don't want to take names actually. As a matter of fact, there was some school that actually No. banned Punjabi apparently or something. Was that true? था I don't know. That sounds like an Asian thing. but I won't be surprised. I'm sure बहुत होंगे यार किंडरगार्टन स्कूल्स बहुत थे. I remember मेरे स्कूल का जो किंडरगार्टन वाला कैंपस होता था उसके अंदर ये था कि वहाँ पंजाबी और ये इसको नहीं like everyone has to speak in English. Also, I like कि ये conversation कोरोना वायरस के बारे में नहीं है. Although I think, but the fact कि मैंने बोल दिया is probably defeats the purpose. But काफी देर बाद ऐसी conversation हुई है जो it's about anything else. No man, it's enough about corona. Like अब है, it's just you know. घर पे हैं Okay, बस. Punjabi seems to be a GCSE subject. Okay. Thought so. Interesting. I've Yeah. never seen it either. Yeah, same. That's why I was curious. नहीं यहाँ पे भी लेते होंगे यार. I'm pretty sure, like if I remember correctly, मेरी बहनें जब LGS में थी तो they would have Punjabi as a subject. My elder sisters. Punjabi. तो हाँ, पंजाबी ने पढ़ी हुई है. Anyway, Hmm. तुम यार इसको प्रोपेगेट करो. Like, मतलब एक सोशल रेवोल्यूशन रहा हो कि बस पंजाबी का सीन ऑन. propagate मत करो, propagate करो. Propagate. Propagate, yeah. This is on the nose. Propagate. ये सीन है. Propagate कर रहे हैं. Anyways, but so before that, we were talking about also debating society of Pakistan. So as much as I like to hate on debating society of Pakistan, like मेरा कोई उसका personal vendetta नहीं है. But मुझे भी ये भी like मैं आज realize कर रहा था, मैं सोच रहा था कि there are so many people who've done so many different things, but उनके काफी ज़्यादा roots are in the debating society of Pakistan. Like even this guy was in debates. Yeah. Amar debates. You debates. Mansoor, were you in debates? No. Music, Good. always music. No. And and I can name so many people like that जिनके साथ मैं काम भी करता हूँ. So while I say कि हाँ debate के अंदर मसले थे, but at the same there's something that these people were at some point they were part of the debating society of Pakistan. Hey man, as an activity, it is incredibly useful. Oh yeah, there's a culture around it which अच्छा certainly एक और can be बात भी improved. बताऊं there's a reason why debating especially कुछ लाहौर इस्लामाबाद जो आपकी मेन सिटी के स्कूल्स में इतनी पॉपुलर हुई क्योंकि और इतनी ज्यादा एक्टिविटीज थी भी नहीं और कुछ था ही नहीं. like you know we didn't have like a Nothing. football ground or whatever कि जिधर like oh okay proper team league matches हो रहे हैं or something like that और so म्यूजिक सोसाइटीज भी as such नहीं थी. Lakaski Music Society was founded when I was in high school. Lakaski Music Society consisted of like 4 of us जिनको एक खाली कमरा मिल गया था in which we had nothing really. yeah So yeah, there was just nothing else to do, so we did debates. And yeah also, like I mean, in my case, pudgy कमाल guy, no muscles, nothing. मतलब if debates is taken for what it actually is,
And if people actually put in the kind of honest research that it requires, so I think debating, if done right, really teaches you not just research and taking care of your due diligence in terms of finding out the truth about something, but also how you can really articulate something very well. To be honest, for me, I think the only thing I learned from debates was bullshitting. I think it really गलत है ना? made me confident to bullshit. That's what I'm saying, because when do you bullshit? Because आपकी अगर argument solid ना हो ना, तो फिर आप bullshit ही करते हो. And that's kind of like what most of our educational system does teach us in the end. But instead, shouldn't it be कि आपकी argument या आपकी knowledge इतनी solid हो कि आप using pure facts and knowledge आप एक बंदे को समझा सको एक चीज को, not just using facts and knowledge, but also articulating it in a way that the other person can understand it. So imagine आप कैसे Be अपने more साथ बात कर informed, रहे हो definitely. जो आपके इंटेलेक्ट लेवल पे नहीं है, आप फिर भी उस सिचुएशन को एम्पैथाइज करके इस तरीके से आर्टिकुलेट कर सको कि वो समझ सके. I think that's the point. But अच्छा मुझे बता, how does one measure intellect level? Like I've always यार अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं. वही ना, like I feel हमजा इमेजिन कर कि तुमने अपने लेट्स सपोज तुमने आई डोंट नो अपने किसी हाउस हेल्प को लेट्स से कि कोरोना वायरस के डेंजर्स के बारे में समझाना है. अब यू वोंट हैव दैट कन्वर्सेशन लाइक यू विल हैव इट विद मी, ठीक है? यू आर नॉट एक्टिवली मेजरिंग इंटेलेक्ट लेवल, बट यू आर जस्ट सिंपली एम्पैथाइजिंग कि उस बंदे तक ये नॉलेज मैं किस तरीके से पहुंचा सकता हूँ कि वो उस बात को ना सिर्फ समझे बट उस पे एक्ट भी करे. I think language बहुत बड़ा बैरियर. Yep. अभी जो क्योंकि हम बात कर हमने रहे थे अपनी एक और जुबान अडॉप्ट कर ली है, एंड देन वी उससे भी हम एक अपनी तरफ से ना एक वो समझते हैं. अब प्लस आई थिंक एक और भी रीजन है. आई थिंक वी आल्सो थिंक, आई नो इट्स अ वियर्ड थिंग, वी थिंक गरीब लोग ना थोड़े अनपढ़ होते हैं या कम इंटेलेक्चुअल होते हैं, विच इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज ट्रू. एंड आई फील ये एक माइंडसेट एक्चुअली मैंने नोट किया इस कोरोना के अंदर. मैंने एक और चीज भी नोट किया, लाइक पीपल आर थिंकिंग कि क्योंकि somebody is rich, they're also clean and they won't have corona. We are not going to name incidents, but like Yeah, that Shadi Hall wali story that was posted on Facebook, it's gross. I didn't follow ये क्या नहीं, ये कौन सी स्टोरी बाकी शादी हो? So I read a Facebook post. Apparently एक शादी हॉल के मैनेजर की एक किसी आंटी के साथ लड़ाई हो रही थी because the guy was saying कि लोग यार हम फंक्शन नहीं आपका करवा रहे, हमें ऑर्डर आ गया है. I mean, if you haven't noticed, this COVID-19 thing is going around. It's pretty dangerous. And the auntie got very, very angry and belligerent and said कि यार lower class वाले लोग इस शादी पे नहीं आ रहे, हम सब साफ साफ टाइप लोग होंगे, तो नहीं होगा किसी को कोरोना इस फंक्शन पे. यार सही है. मतलब vision of the classes type एक थी. Auntie, I don't think you know how it works. हाँ. And you won't be surprised यार, like you won't be surprised इस तरह की stupid बातें. But again वो मंसूर is right कि हम फिर कोरोना पे चले जाएंगे दोबारा. कोरोना के stupid वो जो rumor. But just this one, like people actually believe क्योंकि पाकिस्तान में इतनी गंदी लोगों की डाइट्स होती है, तो शुरू में लोग समझते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारी इतनी गंदी डाइट है. लोगों ने शायद खोते का गोश्त वगैरह भी खाया होगा, so they'll be immune to corona. Like there are people It's actually like it works the exact opposite way, but yeah. So like, for example, my mom, because like my mom's been yelling at me क्योंकि मैंने basically अच्छा खाना कम किया हुआ है और मैं एंजाइटी मोड में जाके चिप्स ज़्यादा खा रहा हूँ. And she's like, you idiot, तुम्हारा immune system कमज़ोर हो जाएगा if you keep eating like bad food. I'm like, what would you know, mom? You're only a doctor. You know, talking about public speaking, that's one thing I think we all can agree on. At least, like I think you should. I don't know if you get like immunes किए थे. इम्यून से कोई फर्क चीज नहीं है. I thought हम debating की बात कर रहे थे, आपने इम्यून क्यों कहा है? मैं पब्लिक स्पीकिंग इसलिए कहा. मैंने कहा इम्यून से फारिग कोई चीज नहीं है. मंसूर, हैव यू डन एन इम्यून? यार नहीं है. Again, not even attended an immune social in school. Of course, मैंने attend किया हुआ है, मैंने socials भी attend किया. Everyone is connected in some way to an immune. मुझे मेरे अंदर debates और immune का वो interest नहीं था. For example, शाहरुख का होगा, just कभी.
वाइब बिल्कुल नहीं आती थी इस थिंग विद टाइम पे भी एमयूएन के एमयूएन के अंदर बड़े लोग जो होते थे उनका कोई उनका एमयूएन से नहीं होता था. They were just there for just like having fun, especially Lumen. बेसिकली Lumen पे I remember in school we got two teams, एक टीम जीतने वगैरह के लिए, एक टीम अपने दोस्तों की. Just to have fun, उनका कोई जीतने का सीन नहीं था. Oh man, Lumen was such a waste of time. That entire weekend was so pointless. बहुत बुलशिट होती थी, कोई फायदा नहीं होता एमयूएन का. Like Zero. literally if you think about it, मैं कुछ नहीं सीखा एमयूएन से. और ये बात नहीं है, उस टाइम पे तुम दोनों की जिंदगियों का हाईलाइट होगा वो, और हम बैठ के कह रहे क्या रहो टाइम जाया किया है ये वो. No. I hated every minute of being in Lumen. When I won my first Lumen, मैं बहुत खुश हुआ था. I was like, you know, bro, मैं Lumen जीत गया हूँ यार. Like amazing. Like scene है. So man, I mean, So wrong. because I went into Lumen like super curious. This is an interesting format. I can see how it might yield, like an interesting experience or whatever. और जब पहला सेशन देखा ना, जो शुरू हुआ था, I was just like massive turn off. अच्छा मुझे तो And then I didn't speak to anyone for like 2 days. मुझे तो सबसे ज्यादा मजा क्या आता है, कुछ लोग जो बॉयज बहुत सीरियस हुए होते हैं, कुछ बॉयज बहुत अच्छा बहुत intense. सूट के अंदर आए होते हैं, they actually think कि वो यूनाइटेड नेशन के अंदर हैं. Like वो बॉयज पागल हुए होते हैं, like you know वो like कोई सीन ही नहीं, को कुछ और करेंगे वो, like they are to the point कि यार आप रशिया हो, मैं आपको रशिया ही कहूंगा. And there are and in boys का scene ये होता है कि during the MUN session उनका accent होता है, like they're super posh and they're very formal. और जैसे ही session खत्म होता है तो एकदम से माँ बहन की गालियाँ on हो जाती हैं और bros on हो जाते हैं. ओफ यार, वो उन बॉयज को देखना हिलेरियस होता है, और वो इतने सीरियस होते हैं, गुस्से में आ रहे होते हैं. और फिर मजा आता है उनमें से कोई हार जाए यार, उनकी ओए डेथ होए होए होए. होने वाली होती है, उनको लगता है कि पर्पस, मैं ट्रेटर हूँ. I have let my nation down. What will Estonia do now? बट शाहरुख, डू यू रिमेम्बर जब हम ए लेवल्स में थे, एमयूएन इतना भी ज्यादा नहीं था. आई रिमेम्बर बाय द It टाइम was just kind of starting out. मैं यूनिवर्सिटी से जब निकल रहा था, तब तो कोई बिकेम लाइक अ थिंग. इट लाइक वो कोई मार्केट सी प्रोडक्ट था कि हर बंदा एक Yeah, every school had its own damn MUN. Every school had its own MUN team. MUNs became the new cool thing. And parliamentary debates was the high effort, low fun activity. या उसे तो दिमाग भी तो यूज करना होता था ना एमयूएन में, उस तरह दिमाग इतना Yeah. ज्यादा था. I mean, probably sounding more bitter than I should be. Like, wait, which would you choose? Speaking for 8 minutes and needing structure, needing flow, having to make more than 1 point versus 4 घंटे एक ऑडिटोरियम में बैठो, बीच में एक तो जुमले बोलना और बचियां चेक करते रहना. डिपेंड भी करते तो मेरे किस टाइम पे सवाल पूछता. Exactly. Yeah. But अच्छा guys, how's music going? यार म्यूजिक Slow. तो काफी मतलब we are forced like everybody कि हम adapt करें to a situation that is very new. मतलब as a matter of fact it's not that new. हमने फरदा जो था वो हमने in a way इस तरीके से बनाया था where हम सारे remote locations में थे. I think असफर सिर्फ remote location में था, हम बाकी सारे boys तो थे इकट्ठे. but इस केस में वो ये रहा है कि हम सारों के अपना इक्विपमेंट है, हम अपने घरों में बैठ के चीजें बनाते हैं, एक दूसरे को भेजते रहते हैं, So it is और possible. के ऊपर चीजें रिकॉर्ड करते हैं. It's possible. It's not as fun as it would be अगर ये सारे बॉयज मेरी तरफ आए और हम जैम कर रहे हो. But it is possible. We're actually thinking कि हम कोई एक entirely नया प्रोडक्ट बनाएं. इस तरह by product I mean a song. I don't know मैं क्यों प्रोडक्ट बोलता हूँ. But anyway, हम पूरा एक गाना बनाएं. Yeah. What I mean by product is it's not just a song. It's a fully mixed and mastered. That's what I mean, like a whole No. package. So You said product, Mansoor. जब भी मैं बात करता हूँ ना किसी और चीज पर. But no, I get what you're saying. No, लेकिन यार but that'll be interesting है cool. काफी, like That'll be interesting. that can be cool. Like
For example, like normally I didn't have the patience to get a sound card, mic up the drum kit, learn how to mix it and all of that stuff. Yeah. और अब क्योंकि वक्त है तो अब इसकी तरफ आ गया हूँ और मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. शाहरुख पहले से ही काफी मेहनत कर रहा था इस डिपार्टमेंट में, learning how to mix things and all of that weird. What do you guys use to mix? Like, क्या? What do you guys do? इसमें भी Audacity वगैरह ही? नहीं यार, Audacity thankfully को थोड़ा सा छोड़ना पड़ा था. So on the software end of things, there's like, you're pretty spoiled for choice. There's a whole range of different sort of digital audio workstation sort of softwares and so on. कुछ cracked हैं और आप torrent कर सकते हैं, कुछ मुफ्त हैं और कुछ बहुत महंगे हैं. So there's something for everyone out there. A lot of people in the Pakistan scene use a cracked version of FL Studio 9. Okay. And by hum I mean मैं और मेरी वजह से, because that's what I push on to the rest of the boys. We use a software called Reaper. But really, softwares to left, right, and center आते रहते हैं. It's the hardware and the damag of the person who's coming up with stuff that's more important. Definitely. Acha, who writes? Aswar writes? Yeah, I write all of the music and all of the lyrics and all of the songs. I do everything. Drums भी मैं बजाता हूँ, record करता हूँ. I hired these guys because they're all better looking than me, and ultimately तो music तो irrelevant होता है. It's about how chickna everyone is. So लोग सारी secrets out नहीं करनी इसकी call में. I've been waiting 5 years to just tell the truth. Quarantine has cracked me. That's the truth. Anyway, Mansoor actual जवाब दे सकते हैं. यार जो majority गाने वो सारे असफर ही लिखता है, but we do pitch in here and there. Like for example, पानी और मिट्टी का जो overall जो text था वो मैंने बनाया था, but असफर ने उसको थोड़ा बहुत polish किया था. If I remember correctly, हमनादान में भी असफर and शाहरुख had a discussion कि क्या theme होनी चाहिए. तिफिल में भी ये सीन था. We all discussed the theme, but हाँ, in the end जो articulation है वो सारा असफर ही कर रहा होता है. And अच्छा, you guys have worked with Raza as well, वो stop motion वाला. Yes. Yeah. Yes, I made a our video with first Raza song. as well. I made my जो Mango Bars की जो पहली मैंने mockumentary बनाई थी वो Raza के साथ बनाई थी, stop motion. Oh. That was years Good, ago. Ed. I don't know if you can remember that, but that was years ago. And आज ही मैं देख रहा था कि अच्छा Raza के साथ भी you guys worked. Yeah, he's a very talented guy. You know, he's super talented. मैं पहले जितना मैं frustrated और on edge आजकल होता हूँ, मैं 5 साल पहले उससे भी ज़्यादा था. I got into like a really passive aggressive awkward online fight with Raza. वो Raza, it's fine. Raza के साथ creative process, that's part of the creative process. But I have also been Raza के साथ creative sessions में. Right. But like at the end of the day, when I saw like the video, man, it blew me away. It was like, यार ये हमारा गाना है, ये हमारा music video. Shit, यार, that's so cool. Yeah, Raza knows his shit. I remember like मतलब अजीब लगता था scrolling through Facebook के वो अच्छा यार ये किसी ने ये गाना शेयर किया हुआ तो हमारा वाला गाना है. बहुत weird लगता था तब. अभी भी ऐसे weird लगता है काफी. वो बड़ी fit video है यार. वो बड़ी I really liked it. मैंने देखी. हाँ असल में यार like I clearly remember उस time पे भी when we released it ना, याद है शाहरुख हम लोग चोको के घर थे. नहीं तुम लोग चोको के घर में थे, मैं लंदन में बैठा हुआ था. हाँ ना, तुम तो थे नहीं. Exactly. हमने वो जब रिलीज की थी उस टाइम पे भी I clearly remember thinking कि holy shit यार ये वीडियो काफी ज्यादा हाला है. मतलब it's a really nice video for a first song to release as a band. तो हम बहुत खुश थे. No, that was good. Yeah, why don't you guys do a live concert? यार पता नहीं. Yeah, there's a couple of logistical constraints. ठीक है, so ठीक है जी. सबसे पहले तो ये कि असफर is currently quarantined in चित्राल. Oh. ठीक है. But let's say hypothetically we managed to somehow circumvent the state of Pakistan और हम 4 चित्राल पहुंच जाते हैं या हम उसे चित्राल से लाहौर ले आते हैं. Getting everyone in one room is going to be a little tricky because मेरे घर में तो absolute no contact with outsiders policy implemented है. So paranoia is at max. और इसमें the sort of next sort of step was कि चलें ठीक है हम 5 remotely
कोई वो तो live मुश्किल है, stream इंटरनेट content की है, वो बहुत कंडीशन, tricky है. इट्स Yeah. इंटरनेट नहीं अभी जो हालत है, हाँ Right. हाँ वो So what we're doing, one thing that we're trying right now is बहुत creative नाम उसे दिया हुआ है. It's the Bayan quarantine sessions ओके because nobody's thought of that. We're doing is a bunch of lo-fi live videos in the sense of we pick a song. अभी के लिए हमने अपना ये गाना तिफल नाम का गाना के साथ ये किया है, but we individually अपने घरों में बैठकर हम ऑडियो और वीडियो एक साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं of us doing like our parts, ओके and then I compile the audio and the video and stitch it together and put that up. So it's live in the sense of जो performance capture hui hui hai on camera. I It's get it, I actually get like me sitting there playing the guitar and so on. it. Okay, so you So guys it's are on it. You guys yeah, जितना possible है वो कर रहे हो. या जो absolutely. कर सकते हैं वो कर ही है, definitely. Yeah. There's no real point in pausing things in that sense. It's actually, if you think about it, काफी interesting है इन सारे issues को circumvent करना and to figure out how to keep going. Well, if you really think about it, like we never could have imagined even like 3 weeks ago कि इस तरह का challenge हमारे सामने होगा. As a matter of fact, हमारे when the lockdown started, उस weekend हमारी 2 या 3 gigs थी in a row. और एक दिन था 3 gigs थी और एक दिन था जिसमें 2 gigs थी back to back हमारी. And it was Yeah. going to be the first time we were going to do 2 gigs in one day और बस वो and we were like 2020 is the year we might actually start making some money out of this. You know, I know. Like कोरोना ने किसी को भी नहीं देखा. Like I remember 3 weeks ago मैं एक यहाँ आइस हॉकी की गेम पे गया हुआ था. Ottawa was packed. Like कोई बात, everyone like ठीक है, पता था कि हाँ यार the corona is here, you know, it's वो, but nobody really thought कि a week from now flights will be closed, we'll be home and just the whole world will be like this. yeah man, absolutely. I think वो fallacy होती है when you Yep. think कि हाँ मतलब वो उधर कहीं Yeah. वहाँ पे उस Yeah. में हो रहा है, हमारे पास नहीं होगा, हम easy हैं कोई मसला And you Like know, we always forget that we are someone else to someone else. नहीं. Yeah, absolutely. oh वही yeah, वाला scene है. yeah, I also feel Yeah, we are more और prepared for, like, you know, अगर ये 10 years पहले होता, world would have been very different. You know, quarantine इतना आसान ना होता जितना अब है. We have the tools, like people are still working, you know. Like मैं भी यहाँ से काम कर रहा हूँ, तुम सब भी कर रहे हो. You guys are, you know, everyone is connected. 10 years ago that was a very different thing. जब वो SARS भी आया था, यहाँ एटलीस्ट yeah, नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे SARS वगैरह आया था. तो आई फील कि इस वजह से भी ना वी वर डेफिनेटली मोर प्रिपेयर्ड एंड इट इज अ स्टार्ट ऑफ समथिंग. लाइक आई फील दिस पेंडेमिक इज गोना अफेक्ट, like I think a lot of these work places are also going to realize कि यार मतलब सारे लोगों को शायद काम पे आने की जरूरत नहीं है. yeah, वो भी है और you know मतलब point है कि technology has changed मतलब the घर से काम entire हो scope सकता of है. how things can be done. Exactly, घर से काम तो हो सकता है लेकिन there's a lot of other stuff to really think about. For example, जो the ability of governments to impart surveillance on their citizens. वो भी एक ऐसी चीज है, like if you reading up on how coronavirus kind of allows a lot of governments to Yeah, like I get your point. capitalism का एक पूरा एक सीन है. मतलब I don't know if I should be getting into it right now. काफी dry और काफी मतलब एक geeky सी conversation है, but ये जो pandemic है, in short, it allows a lot of governments to get into this kind of surveillance by saying कि oh यार ये तो emergency है, ये करना लाजमी है. And then once this kind of happens, like because we're online, हाँ, क्योंकि सारे online है. yeah, No, it's not just online. It's also in the sense of policing, like the physical and geographical policing and tracking of human beings. So something like the COVID-19 pandemic essentially empowers the government to make the argument कि क्योंकि हमने generally societal health का ख्याल रखना है, इसीलिए हम individual इंसानों की movement को पहले से ज़्यादा track करेंगे, restrict पहले से ज़्यादा करेंगे, etc., etc., etc. So even when we're through this pandemic, and hopefully we're through it very, very soon, the infrastructure and capacity that the state builds in order to monitor and police and regulate people's geographical and online lives, that infrastructure will still remain.
So for example, while all of this is happening, do Google it, the news mil jayegi. There's been a lot of backlash for a particular कह लो a law that is being attempted to be passed in the US जिसमें जो end-to-end encryption है on apps वो खत्म कर दी जाए. Oh yeah. So और मतलब just Google it. I'm not exactly sure कि वो पास होगी है या नहीं हुई है, क्या सीन है, but ये attempt हो रही Check it है. out. US में तो भाई अभी गदर मचा हुआ है. बल्कि एक बहुत बैड सीन है उधर. Oh bro, everything is like सबसे ज्यादा केसेस हो गए हैं. ट्रम्प पागल मतलब भाई मतलब बहुत और स्टेटमेंट दे रहा है. शौक ये पड़ी. The age of surveillance capitalism. Sure man. Let me type it down. It's a very Russian sounding name, bruh. But I like it. Very different. Dude, आज ना मैं literally I think एक Khabib the UFC fighter, so I follow him on Instagram और Yeah. वो ना live गया हुआ था. I don't know, मेरे साथ काम कर रहा था, मैं उसकी live लगा ली. अब मैं ना यार 20 मिनट सुनता रहा, like I think 15-20 मिनट में सुनता रहा उस live को, and that live was in Russian. And I was like, I don't give a fuck. I was like, sure. चलो ठीक. It's fine. I'm like, I'm done. मैं काम कर रहा हूँ. And I didn't, it's like बंदा mind करता है. मेरे को ज़्यादा mind नहीं किया. I didn't really consider it as a waste of time. I was like, I think I think brother Hamza might be an FSB agent. Who knows? Part of the whole surveillance capitalism thing. Oh, dude, talking about Russia. So much news on Russia. Shayad Putin, the doctor Putin met with, supposedly is tested positive for corona. And when Putin met the doctor, and when Putin met the doctor, he wasn't really covered and stuff. Like BBC just reported it a while back. That's interesting. I mean, maybe that is what will get Putin. मैं तो भी कह रहा हूँ. Democrats it didn't take a revolution. It didn't take a political rival. It took a virus. Took a virus. Shit, man. Yeah. I swear, it's like stopped everything. We were thinking at Propaganda, we wanted to do like a talent show, like an online talent show on Zoom, and like Pakistan Got Talent. So I don't know, हम नाम क्या होगा? We wanted Propaganda's Got Talent. We were like Corona talent से हमने कहा थोड़ा सा insensitive हो जाएगा. कोई something Ganda type कर लो ना. Ganda's Got Talent, yeah, the new upcoming Ganda type. तो उसका हमें cash prize रखना है, and then we just want people proper talent. करें. So we want to do that. Let's see. That'll be fun. I mean, if you can hold off on the idea for a month, wait until like the total breakdown of utilities in Lahore, and then you can host the first ever proper Hunger Games. Proper. खाना मिलेगा. Ganda Games. वो तो evolve भी कर सकते हैं ना. तो next वाले के अंदर हम पानी की बोतल, रोटी एक होगा, आप रोटी के लिए लड़ रहे हैं. फ्रेंड आपकी live starvation दिखाएंगे हम. So it'll be आपको लंच चाहिए, kill that other guy. So थोड़ा crazy. It's what you would have done anyway, but now we are making a video of it and we'll put it up on YouTube and it'll be monetized. It'll be monetized and we'll get Pepsi or Coke to like sponsor it. और उनको नहीं पता होगा ये होने लगा है. और वो पागल हो जाएंगे. सोचो, like they're screwed for life. जिस brand manager ने वो allow किया ना, they'll be screwed for life. Yeah, boys, exit मारे यहाँ से. यार Pepsi तुम बहुत डर गए हो यार. अच्छा वैसे मजाक के अलावा like I mean एक तो dark humor is a Pakistani thorough defense mechanism, लेकिन honestly gamifying the quarantine, thinking of it as a challenge कि मैंने अगर XYZ Bayaan related task करना है तो how do I circumvent blah blah blah. I swear it's just a way to stay sane and prevent like this absolute onset of existential dread. Haven't you seen वो Black Mirror का episode where they have to do stuff to get stuff basically, and that's just their life. That is one. Isn't that our life?
that वो उसी को वो दिखाती है ना कि सोच करके इसमें से एक प्रोडक्ट उन्हें इसको लाइक गेमिफाई कर दिया है. हाँ हाँ, वो द साइक्लोन वाला जिसमें the dude from Get Out was in it, Daniel something. Get Out was a Anyway, good movie. हाँ नहीं, काफी काफी intense शो है ब्लैक मिरर. I'm so glad कि मैं ब्लैक मिरर नहीं देख रहा आजकल. Have you seen हमारी all of it? जिंदगी ब्लैक मिरर होगी यार, और क्या चाहिए. इतनी ज्यादा अगले साल ऑस्कर सीजन में इतनी ज्यादा लो बजट crappy फिल्में बनेंगी ना about a husband and wife coming to terms with how they don't really know each other and they're forced to confront this knowledge कि दूसरा बंदा stranger है because they were quarantined together. Yeah, this father and son who sort of deal with their issues and blah 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 blah. I mean I don't want to see 2021 का Hollywood. बट मैं सिर्फ सोच रहा हूँ 2021 के बॉलीवुड के अंदर आइटम नंबर कैसे दिखाया जाएगा. कोरोना प्यार है ब्रो. कोरोना प्यार है, उसका आइटम नंबर कैसे होगा. सारे अपने लैपटॉप की स्क्रीन के आगे डांस कर रहे हैं. स्काइप पे हो. अच्छा यार एक बात, अच्छा मैं ना सोच रहा था अगर मैं इस वक्त ओ ए लेवल में होते हम, यार मुझे याद है लाइक कैम्ब्रिज की एग्जाम्स डिले हो जाना was it was as big as like judgment day, like you know कैम्ब्रिज की एग्जाम डिले हो ही नहीं सकते यार. you can't even fathom कि कैम्ब्रिज की एग्जाम डिले हो जाए. Yep. सही बात है यार, लेकिन आई सेंस कि अब एक जो डिले हो गई है ना, शुरू में बच्चे बहुत खुश हो गए, मतलब कि कोरोना पार्टी थ्रो की जा रही है और सारा कुछ हो रहा है, लेकिन आई सेंस कि इट हैज टेकन वेरी लिटिल टाइम फॉर एवरीबॉडी टू गो लाइक यार शिट, ये तो बैड सीन है काफी. ये नहीं होना चाहिए था. I mean, it took everyone 2 days to go like, yay, exams cancelled. Wait, I have to spend every day at home with my parents. अच्छा with that also I feel कि यार so I was like today reading something, there was somebody had written like किसी ने कोई अप्रैल फूल से कोई जोक किया हुआ था, तो एक दो लोग बड़े ऑफेंड हुए थे, आज अप्रैल फूल का जोक नहीं करना चाहिए and stuff like that. So I was like यार मतलब इससे तो लोग पागल हो जाएं, you know, if everyone's just serious and morbid all the time, तो फिर तो I feel that's the only way people can now cope with this, right? We're stuck. This is the only mechanism, at least I know, is, you know, just comedy, just like, you know, making fun of things and just passing time. You know, I agree. Like, I mean, one way of dealing with trauma is to mock it. Yeah, like, अब shit तो बुरी है. There's only so much. There's only so many times you can say, यार, stay home. अब कोई बाहर निकल रहा है, मैं, you know, you can't really like take responsibility. Yeah. Well, I heard कि You know, कि वो वॉक थ्रूज दे दें. वॉक थ्रू कहते हैं लाइक एज इन बस वो बेसिकली बस पास करते हैं लोगों को. Is that in any way true? And does that even make sense? Like, don't you have to complete your entire term? I'm not sure if that's happening. For example, मुझे ये तो पता है कि लम्स ने convocation और graduation obviously delay कर दिए. वो अब दिसंबर में उन्होंने कहा है कि हम कराएंगे. Classes चल रही हैं लोगों की, albeit online है, पर चल रही हैं. हाँ. अच्छा, so with online classes by the way हर जगह नहीं चल रही. जैसे अभी आई थिंक पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स अभी 31 मई तक खुलेंगे. देन कुछ जगह हमें कुछ लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर व्हाट्सएप मैसेजेस पे क्लासेस हो रही हैं. I kid you not, वो व्हाट्सएप मैसेजेस This is the best use of WhatsApp I've ever heard. How exactly does that work? Like आपको एक lecture, बस टीचर ने ग्रुप बनाया और टीचर ने उसकी सेटिंग ऑन की कि सबने रीड कर लिया है और टीचर बस वॉइस नोट्स पे देता जा रहा है, नोट्स वहां शेयर कर रहा है. तो फिट है. अगर हम सबके अंकल्स हमें कंस्पिरेसी थ्योरीज व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं तो ये भी होना चाहिए यार. सही बात है यार, बहुत आला यूज है व्हाट्सएप का. ऑल्दो मतलब यू कैन डू द सेम थिंग ऑन जूम और समथिंग, और एक्चुअली आप लाइक प्रेजेंटेशंस वगैरह भी कर लो. बट तो बच्चे हमें बेसिकली कह रहे हैं कि यार ये पैसे लेकिन हमसे फीस क्यों पूरी मांग रहे हैं, क्योंकि फीस उतनी मांग रहे हैं. यार तो जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको पैसे नहीं देने ऑब्वियसली यार, मतलब कुछ हद तक तो फीस लेंगे. श्योर, लाइक आप फीस कम कर सकते हो, दैट मेक्स सेंस फ्रॉम वही कह रहे हैं कम कर दें, वो यही कह रहे हैं ना कम कर दें, क्योंकि यार so universities are not exactly like universities from what I understand are not doing any fee reductions whatsoever. I mean one reason why you pay a university the fee isn't just के professor की तनख्वाह, you're also paying for the wear and tear and the usage of the facilities. अगर फैसिलिटीज बंद हैं तो यू नो प्रोफेसर की तनख्वाह के लिए फी दे दो.
हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक मेरी 2 छोटी बहनें भी करंटली अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी में हैं, एंड अब वो ऑनलाइन क्लासेस उनकी शुरू हो गई हैं, एंड लॉट ऑफ देयर बैचमेट्स हैव बीन आर्गुइंग कि फीस कम कर देनी चाहिए, हम घर बैठे हुए हैं, बट आई डोंट थिंक एनी यूनिवर्सिटीज आर गोना बी डूइंग दैट. Also, Yeah, man, like it's so many also more people are difficult in the gonna. sense कि like what about all the companies जिनके workers घर बैठे हुए हैं. So a lot of companies उनका nature ऐसा है कि work from home नहीं हो सकता. For example जो मेरी family company है उसमें nature ही ऐसा है कि we can't work from home. So what we end up now doing is we have to pay all of our employees their full salary every month despite the fact कि वो सारे घर बैठे हुए हैं, because Yeah, हम उनको सैलरी नहीं देंगे वो भी ज्यादती है, लेकिन हमारे एंड पे इशू है कि हम जेब से दे रहे हैं. It's a very difficult situation to be in. it is. Yeah, no, man, it is. Like that's what I was like. It's so like it's there is nothing you can predict. What I can predict, and that's an unfortunate reality. But I think what's gonna happen is that when this ends, we are looking towards a very big economic crisis, especially in Pakistan. Yeah, Because so many people are going to be jobless. We probably have to cover it through debt. Debt हमारा और होगा. Just yeah, that's going to be tough. I think the असली tough stage आनी है, that's going to be after the pandemic. yeah, absolutely. I also sense कि एक काफी हद तक एक nationalistic vibe और closed किस्म की vibe हो जाएगी for almost all countries on their own. Like अब दीवारें खड़ी होंगी, because of course you don't want when you हाँ want कि pandemic में tail end पे जा रहा है तो फिर भी traveling कम हो, and then of course उनके सारे मालिक अपने अपने economic यार crisis मतलब में होंगे, तो want to local खरीदें या local काम करें. So let's see how it goes. ये डिफरेंस भी है ना. आई फील बिग कंपनीज आर गोना स्टेप इन. लाइक एक फर्क भी है. अब यूएस ने अनाउंस किया $2 ट्रिलियन की एड. पाकिस्तान ने अनाउंस किया गर्म पानी. तो यू नो 2 ट्रिलियन सो जिसके पास है वो दे दें एड, क्या कर. हाँ. so there's also this massive inequality which we can't. There's only so much we can do about that. So उसके बाद बस दुआ ही है कि चलो होपफुली कुछ हाँ, कुछ हो जाएगा. let's बट see. या फिलहाल तो ये फिलहाल सीन है. तो फिलहाल तो तुम फिर फिलहाल तो करा रहे हो सैड है. अपना गैंडा गेम्स फिर? यार गेंडा गेंडा गेम्स का सीन ऑन. गेंडा गेम्स नाम हो गया है. यार लॉक करो ना यार. गेंडा. Also, like, also online gaming के बाद if you enjoyed the match, आप कहते हैं GG bro, good game. तो Ganda games can be GG bro. Like What that can be your यार sign हमारे off. पास ब्रो हमारे पास बहुत आइडियाज आती हैं. सो हम कभी कभार हमारे पास जैसे अभी हम एक और आइडिया भी करना चाहते हैं. वी वांट लाइक वो जो गेम प्लेयर नहीं है अरसलान ऐश, वो जो टेकिन का आई थिंक Yeah, बेस्ट प्लेयर है. Tekken boy. हाँ, हम उसको लाइव बुलाना चाहते हैं और उसके साथ हम लोगों को ना चाहते हैं ऑनलाइन आ जाएं गेम करें. सो सडनली आया, तुम आए शाहरुख, तुमने जूम पे उससे खेला, तुम हार गए, यू गो, मंसूर कम्स इन. मंसूर जूम पे आया, लाइव खेल रहा है, अगर तो हरा दिया तो देन मंसूर गोस टू द नेक्स्ट राउंड. So we also thinking on I that. So would we have say, a lot of these yeah, ideas why coming up. not? Let's see कौन सा वाला कहाँ वो होता है. The bloody internet is also a big problem. कि इंटरनेट हर Yep. जगह इतना वो स्लो हुआ है कि it's just अभी तक I think मंसूर और मैं थोड़े से lucky हैं because हम fiber boys हैं so far. We're all right. हाँ ब्रो ये तो है. But so for example, so मैं कहना चाहता हूँ, one reason why our quarantine sessions वाली thing is so frustrating is चित्राल में internet इतना बुरा है कि it literally takes us for hours to upload a file. shit, I can imagine that यार. कि चित्राल में. But क्या वैसे अच्छा मुझे why like why is it so expensive to set up internet connection in Chitral? What will be the main वो? I mean, I guess just the terrain and getting the stuff up there, perhaps. Coverage, यार I mean, thankfully, motorway पे अब coverage शुरू हुई है, तो hopefully over with time बढ़ती जाएगी. So even if the Yeah. physical infrastructure doesn't get there, अगर cell towers वहाँ पे आप लगाते जाएं, तो could get there maybe. हम लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह पे लेके जाना कितना मुश्किल है. कैन यू इमेजिन कि इस वक्त इन पाकिस्तान 40 मिलियन पीपल डोंट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी. सो तुम सोचो कि बिजली नहीं है तो इंटरनेट तो काफी दूर की बात है. हम यहाँ पे बैठे हुए अपने पैलेसेस में थिंकिंग कि यार चलो इंटरनेट इज लाइक अ बेसिक राइट, रोटी कपड़ा मकान के साथ इंटरनेट आता है, बट ऐसा सीन है नहीं. लाइक True इवन that. टेलीको टावर्स
की प्लेसमेंट, उनको बनाना, उनको लेके जाना इतना भी आसान काम नहीं है. No, और obviously, agreed. No, yeah. I agree with you. अच्छा, boys, so अच्छा मुझे म्यूजिक का तो यार बताओ जरा. Like, there's one thing that we haven't discussed in this whole sausage is the music scene. Where are The we? Bayan in the room. First, tell me, how did you guys like LLM? I think Natasha and Yeah, everyone did a pretty cool job. oh, it was a lot of fun. I mean, हमारे लिए तो it was a very very special day because we were releasing our album. So Yeah. And that's what I want to know as so well. I mean, How was that? And then you were also doing another man, thing. You were also releasing that short film. yes, exactly. So in the ये बहुत same hall multitask. जिसमें So in the same hall जिसमें बयान का album launch था, the session right after that was the Lahore debut of that of our short film Shahri Tabassum. Yeah. So it was an eventful day, but just the number of people who showed up for the album launch, and then the fact that I mean, कौन म्यूजिक खरीदता है पाकिस्तान में, but despite that, like जो हम physical copies लाए हुए थे at LLM, we sold out like in like an hour and a half maybe. Oh, It was wow. insane. Wow, And keep man. in mind कि जो हम sold out हो गए थे, that amount of albums, we expected कि उसका शायद कोई 10% 20% बिक जाएगा, बाकी हम देख लेंगे क्या कर सकते हैं, बस बनाओ, एमी शौक से बना लो. इसमें But that's cool that इसमें I'm people going to like bought jump physical इसमें I'm going to jump albums. in with like a supreme intervention. ठीक है, ये हमारा एक मैसेज फटा हुआ था the day before with me going like लोग खरीदेंगे. Like you mark my bloody words. We should price it even higher. Log kharidenge. And boys going like, I don't know, man. Shayad fifth quantity big jai. Nobody buys it. I was like, I have great faith. Log kharidenge. I didn't have an argument. I didn't have a point. I didn't have any logic. I said, hoga. सारे यही That's कहते cool. हैं, People पता है, bought the सारे physical कहते हैं. album, yeah. That's really cool. Do you guys have the album right now? Can I see? हाँ, मेरे पास नहीं Yeah, पड़ी just है. give me 1 second. It's right here. Oh, तो nice. इसका ये चीज उतरती है इस तरह है बेसिक. Oh, It's off. nice. It's Congrats. basically a book. I don't know कितना नजर आ रहा है तुम्हें, but I think शाहरुख दिखा देगा इस point पे. It's like the best looking guy in the band right here. Choku hi hai na? Haan, the best looking guy in the band right here. Okay then. And we go all the way to the end और वहाँ पे a USB in a cutout in the book. Yeah, So the physical USB. album is in a USB, and the idea is that sure, you spend a little bit of money, you get the book, you get the book jacket, you get a poster. We have sort of we've tried to have a personalized message from each band member handwritten in every We've single got copy. something here. This way you can take people's faces, our faces, and then kind of change them around. So, for example, let's see. So अगर आपको मंसूर की आंखें पसंद है लेकिन उसकी चिन नहीं तो चेक करिए हैदराबाद. ये काफी फिट है यार. अच्छा, who Yeah. made this? Who made this? So there's a dude named Azim who is from a talent management organization called Rearts. Rearts pretty Najamwala. much exactly Najamwala. So they're lifesavers and they're lovely guys. It was a lot of fun to like work with them. So this idea, this design, the layout, etc. This was them. Okay. They've done a good job. Oh, no, Yeah, absolutely. Definitely. इसके अंदर एक पोस्टर भी होता है और 2 स्टिकर्स भी हैं. 2 है, एक है, 2 स्टिकर्स भी हैं. और Stickers भी हैं, and like if you get the album USB pay, you don't just get the album, you get the album in MP3 as well as in a lossless format. And we've also thrown in every song we've ever done as like a bonus folder. Basically ये सिर्फ album नहीं है, discography compilation है. That's really cool. That is actually pretty cool. Who came up with this idea? Yeah, album का idea ऐसा नहीं था, इतना goal था. I think for us always it's been reaching that point कि हम एक album निकालें, and then album निकालना is then the first step. You understand? And उसके बाद आगे we make more albums, Obviously. more concept albums, different kinds of videos, different
concepts and stuff like that. But like the physical and logistical sort of reality of the album, Re-Arts Boys really helped us Okay. out because what we were in absolute control of was कि music क्या है, and track listing kya hai. And we had like a vague idea okay we wanted to not be tacky, we wanted to be cool, we want the album to be have some sort of at least a limited physical release, and that it should be like a celebration for us as well as for the fans who end up getting it. I think But that's also yeah. no, definitely, and I think that's really cool that companies like Re-Arts are now opening up and like young boys and they समझते भी हैं और ये अब the new generation है जो संभाल भी रहे हैं. I'm guessing they're representing you guys now as well, or I don't know how this works. The whole is that. So Actually, yeah, let's talk about how does all this work. Like, I'll be curious. कि like कौन क्या करता है, क्या किसकी designation होती है. I can't really tell you how other bands do it because I'm not really sure how other bands do it, but Yeah. Bayan is self-managed. Okay. For the most part, हम अपना scene खुद ही कर रहे हैं. ठीक है. We're sort of signed up as a re-arts artist, and what that effectively means is कि we get to work with them on stuff like this. Okay. We're part of their lineup, should they need us or should they want us anywhere, and so on and so forth. But we don't have a bona fide manager, as in we don't have a bona fide external manager. हमारे end पे Heather is our, de facto manager in that ठीक है. sense कि वो third parties के साथ वही deal कर रहा होता है. Yeah. Oh, suave, sophisticated, charming, थोड़ा सा Enrique की तरह लगता है. He's the ideal choice. That works. Makes sense. So the ecosystem here is pretty nascent. There's not a whole lot of organizational support for bands and musicians. So financially speaking, we're heavily reliant on live shows. And uska bhi unfortunately एक gig season होता है, which is whenever the temperature is not summer. Yeah, whenever the weather is in summer. You have let's say like a 5 to 6-ish or 4 to 5-ish month window just may shows are lining up, and usme if you position yourself right, if you're relevant that season, schools or colleges may, if people are listening to you have organizational teams such as Lumen event kar rahe hain lekin event wala Bayan fan hai, so they'll contact us and so on. So I guess one thing that's kind of cool but also sucks is that there are so many bands now. So काफी competition hai. It's super cool that there are, but it kind of sucks for us because it would be nice if there's बहुत कम bands होते and we'd get more shows and stuff. Yeah, but I do feel that you guys still have your. If I would just यहाँ पे मैं एक चीज add कर दूँ, like the only reason why it sucks कि इस particular market में players यानी bands ज़्यादा हो रहे हैं is because the market itself ज़्यादा expand नहीं करी. So for example, कितने नए events सिर्फ म्यूजिक के आ गए हैं, कितने नए फेस्टिवल्स आ गए हैं, कितनी नई लोकेशंस हैं फॉर म्यूजिक, कितने ज्यादा रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हैं. सो इसी जो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना म्यूजिक इंडस्ट्री का, वो इतना बढ़ नहीं रहा, बट वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स कम इन. तो आई थिंक इस वक्त जो खैर अब अभी की सिचुएशन को साइड पर रखते हुए वैसे द टाइम इज नाउ के पीपल इन्वेस्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री, उनकी काफी गेम है. फॉर एग्जांपल अभी कोबलम्पी एक म्यूजिक फेस्टिवल and doing incredibly well. So मतलब ये वो time है कि if you do start something in music, it is for sure going to boom up because बस supply demand दोनों side को push और pull कर रहा है काफी ज़्यादा. Yeah, I also feel that while there are a lot of bands market में आ रहे हैं, and I completely agree कि I think market में saturation हो रही है, लेकिन I don't think necessarily सारे quality के bands आ रहे हैं. Like when I look at you guys, I don't compare you, and I don't think people compare you with every other band जो निकल रहा है. You guys are a little above that. And that's fine, and that's very good actually. मुझे बता दो, तो headphones तूने जब लिए थे तो तुमने आई एम श्योर सारे ऑप्शंस देखे होंगे. कमाल से कमाल महंगे बोस के भी होंगे और सस्ते से सस्ते चाइना के भी होंगे. ये सस्ते वाले. That's how it's supposed to work. ये भी सस्ते वाले.
लेकिन यार That's यार how it कमाल works. से That's कमाल fine. बॉस के नहीं होते। हाँ हाँ, यार कमाल से उसके कमाल भी बॉस होने के नहीं हैं, होते। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार, वो नो खुद वाले काफी फिट है भाई, नॉइज बट कैंसलिंग वाले बहुत। मैंने अपने अच्छे हेडफोन्स ग्रे हाउंड में घुमा दिए। मैं आ रहा था और वो अभी भी उधर ही है, पता नहीं कब मैं जा सकता हूँ, अब तो क्वारंटीन में चला गया हूँ। बट गुड यार। now I'm stuck with these, whatever these are. But acha, and I think this is a good question to end on as well. Okay, what about music? Like, what do you think? Just your personal opinion. मुझे expert opinion नहीं चाहिए। मैं just what do you guys think कि music किस तरह affect होगा with this corona? Like musicians, how will they be affected? Are we talking वही like career musicians इनके पास और कुछ नहीं है, या Both, just both, but obviously more pertaining to you guys, young musicians like yourself. yeah, it's just the obviously हमारी activities से बहुत एक significant impact हुआ है. In our particular case, we were just about to shoot a music video. We were just about to do like an album related event. A very integral part of music is live music, live shows, events, etc., etc., etc. Getting like let's say a few hundred people into a space and just having like a shared experience. So एक तो from like a financial standpoint उसका impact हुआ है, but also it's a lot of fun to do live shows. So एक तो धचका ये पड़ा है कि for the foreseeable future उस तरह की special interaction हमारी नहीं हो सकती with our fan base. Because I'll be honest, playing live is more fun than writing music. It's more fun than jamming. It is infinitely more fun than recording. Recording is a pain in the ass because Hmm. it has to be perfect and you have keep playing the same song. जब हम गाना प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, by the end of the process कोफ्त हो रही होती है, गाने से नफरत हो जाती है because you've done nothing but listen to the same thing over and over again. So given that that's the challenge, I think जिन musicians के पास equipment or capacity है, they've immediately turned and they're leaning a whole lot more aggressively on social media. Um, every person with at least a smartphone with a selfie camera and an acoustic Uh, guitar has been doing their sort of dirty covers. 1 minute के जो इंस्टा पे लग रही हैं. Some people who have better equipment, more capacity to do more intricate stuff, they're doing like quick covers and editing it fancily and yeah. etc etc etc. So What? if there was some way to just, I mean, अगर इसे sustainable बनाना है, if there was some way Uh, to just monetize it better, that would be helpful. So what I was thinking, and this is for both of you, कि अब अगर ये चीज चल ना करे obviously, but supposedly अगले 6 महीने जी we are in lockdown, okay? And what do you think would be the way to like monetize this? Do you think people will start having like these private online concerts where like I don't know, Um, लोग maybe मैं कहता हूँ इंटरनेट सही हो जाए, वो figure out कुछ हो जाए, you guys yeah, get yeah. like high speed internet, what then? So the thing is कि like Imagine for me पाकिस्तान के थोड़ा. बाहर तो no, exactly, like पाकिस्तान के बाहर तो ये मॉडल ऑलरेडी टेस्ट आउट हो रहा है Okay. with both bands as well as other live acts. There's just comedians doing a thing where they'll set up like a live stream room जिसमें limited space होती है and आप पेट्रियन भी in है, advance पेट्रियन भी करता है ये. exactly right और आप और सीन क्या है कि let's say $5 entry है and if when you spend the $5 वो आपको stream access करने की key दे देंगे and then 200 टिकट के बाद बस event खत्म हो गया 200 लोग they log in to wherever the thing is and then they watch like the show. So it is to a certain degree it is working. There's a comedian named Steve Hofstetter who's like famous on YouTube for his heckler videos. Okay. उसने ये चीज ट्राई की and my understanding is कि it's been like fairly successful कि he's been selling out these shows. So that is certainly an option. Really? I'm also Can hearing, you yes, tell me his name again? Steve Hofstetter. Okay, sure. I'm gonna. I'm also sort of reading just these tidbits about different metal bands doing like complete live sets on a stage except khali kamre and they're streaming it from different angles and stuff. And उसमें भी I think उन्होंने किया यही था कि you pay like a ticket price for a stream key.
So it can work. The only question is कि यहाँ पे ये किस तरह इसके हाँ organization logistical sort of सूरत हाल क्या होंगी, because it's not just internet. You also need like for example digital payment key mechanisms को I think you'd have to make it more readily accessible for I, people. I think it's more of That's a all. if somebody on an individual level can do it, probably you on an individual level, both of you can probably pull this off कि यार हम अपना कुछ कर रहे हैं स्टार्ट और हम इसका कुछ ना कुछ कर देंगे यहाँ से पेमेंट ये करके it'll be much easier. Yeah. Right. No, exactly. So if this keeps going on, and if the Bayan Boys are all back in the same city again, और अगर हम पांच के पांच hopefully safe रहे, healthy रहे, so this is definitely something that can be done. मैं of course naturally अपने bank account की details दूंगा, and I won't tell the boys कि हम charge कितना कर रहे हैं, Yeah. finder's fee and whatnot. But it's definitely something that can be pulled off. हाँ बहुत I I think mean, interesting हो. I mean Storm Fiber है, पैकेज अपग्रेड कर लेंगे, 30 MB से 50 MB कर लेंगे. Test out करना चाहिए. Definitely, why not? I And think if it does get tested out, Check it. that's another stream of revenue. Yep. Yeah, But it is इसमें really मेरा good सबसे to बड़ी see टेंशन कि ये है. अगले 6 महीने में लोग क्या क्या निकालते हैं और क्या क्या करते हैं. I mean, like अभी तुम यहाँ 3 लोग बैठ के आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, right? Like I'm sure there bunch of ideas जो हमने भी नहीं सोचे हुए अभी तक, and somebody somewhere is going to do a lot of interesting stuff. Like I'm sure. कैनेडा But गेम्स भी तो है ना यार. हाँ अब मेरी वैसे सबसे बड़ी टेंशन इस चीज में ये है कि let's say कि we plan the entire thing out and it's beautiful, like we've actually put in the time and the effort, and we also spent money on better cameras and whatnot, और हम सब तैयार करें and only like 20 people show up to the live stream. So like this yeah. is one thing that's But personally कोई sort of नहीं. दिल में holding me back. But I feel Yeah, that's लेकिन fine if you because आप दूसरा बनाओगे तीसरा बनाओगे आपके पास रिकॉर्डेड होगी वो वीडियो आपके पास है and that's Yeah. how it will. It's आहिस्ता आहिस्ता ही होगा. वैसे if you ask me, Yep. my concern is the monetization bit, because considering that there is so much content जो मुफ्त बस float कर रहा है हर जगह, why would people want to pay for content in the first place? शुरू में So तो यार हम उन्हें बुलाएंगे ना कि आपको एक एक्सपीरियंस देंगे एक्सक्लूसिविटी का क्योंकि इतना जो कंटेंट फिर है दैट्स व्हाई पीपल लाइक कि यार थोड़ा एक्सक्लूसिविटी हो मैं जरा इस तरह कंटेंट पढूं जो हर बंदे के पास एक्सेस ना हो एटलीस्ट आई थिंक लाइक दैट कि मैं क्लटर से निकल सकूं सो ये भी बड़ा मसला होता है बिकॉज़ देयर इज सो मच फ्लोटिंग अराउंड बट अगेन ऑब्वियसली आई लाइक पेमेंट फिर भी बहुत कोई इतना आसान काम नहीं होगा जैसे जो मुझे दिमाग में आ रहा है एक जो आसान चीज हो सकती है वो इजी पैसा है कि आप इजी पैसे का कोई दे दोगे कोई जाके इजी पैसा करा दे दैट इज वन वे बिकॉज दैट्स लोग मोबाइल में तो अपने भरवाते ही है ना कहते अब बात है कि उस ऑडियंस को कन्विंस किया जाए कि जी आप आओ और आप भी ये देखो सो आई थिंक it's a slow process but I do feel कि that's where the world will eventually go and start तो करना चाहिए Exactly. तो like I remember मैं कुछ हफ्ते बाद बॉयज को कह रहा था कि बॉयज इस तरह की हरकत कोई ना कोई तो कर ही लेगा, तो कोशिश करते हैं कि हम ही पहले बॉयज बन जाएं to do I it. mean, like what's there to lose like there's nothing to lose at least you guys like एक सेटअप तो हो जाएगा कभी भी करना हो एक सेटअप भी तो मजे का हुआ है हाँ, उसके अलावा वैसे भी That अगर आप is सेटअप नहीं true. कर रहे और अपने अपने घर पे बैठ के सारा कर रहे हो, उस केस में भी there's nothing to lose. You have all the time you want. If anything, you're going to walk away learning some new skills. और आपका Yep. झाका खुल जाएगा, खुद रिकॉर्ड कर रहे हो, खुद एडिट कर रहे हो, फिट है. मेक लाइक अ किलर वीडियो आउट ऑफ इट एज वेल जैसे वो एक बार याद है नूरी की एक बड़ी आइकॉनिक वीडियो थी बस वो गाड़ी के अंदर से कैमरा पकड़ के वो क्या था नूरी का गाना वर यू नूरी फैन यार yes, आई fan right डोंट है, नो लेकिन वीडियो नहीं मिलता यार. यार वो एक थी वो वो लिटरली वो रैंडम ही जस्ट गॉट आउट ऑफ द कार एंड द कैमरा और बस वो पूरी स्ट्रीट्स में जाते जाए आई फॉरगॉट द नेम आई डोंट नो you guys aren't नूरी फैन so मैं फील नहीं आएगी I mean, मेरे लोग is a fantastic song, but I haven't really heard that much Noori. आई थिंक इस मेरे लोग डूड मेरे लोग में वो कैमरा गाड़ी के ऊपर करके जाता है एक मैं सेकंड चेक I think मेरे लोग is the one in which वो slow motion में दिखाते हैं पाकिस्तान के लोग, हाँ and it's हाँ all वही like, है look at all these. अच्छा वही. वो गाड़ी में ही बैठा हुआ है बंदा वो गाड़ी से ही Eh? कर रहा है वो कोई इतना नोट करो याद करो हाँ शायद वही हो. हाँ हाँ वही यार है ये काफी आई डोंट नो मंसूर आई थिंक कर रहे wave हैं मंसूर के on मैंने your wavelength, bro.
Mansoor, you look like you're trying to remember कि तुमने kitchen की light on तो नहीं छोड़ी हुई. Yeah, what good song है. मुझे वो नहीं, सीन नहीं मंसूर याद आ seems रहा. the guy जो नहीं भूलता ओ किचन की अच्छा, लाइट. ये सही है, ठीक है. वो गाड़ी में तो नहीं है, वो एक मतलब गधा गाड़ी टाइप सिस्टम पे है. अच्छा गधा गाड़ी तो ये मुझे नहीं पता भी है, मैं और क्यूरियस हो गया उस वीडियो के बारे में. Yeah, Gada Gadi is also a kind of gadi, bro. Don't be elitist. सही है, classist. You and your English debates. Hey, what's wrong with being classy? Yeah. Boys, क्या सीन है यार, मैं तो सोने की फील में आ रहा हूँ. फील में जाओ boys. Thank you so much for joining me, coming to another episode Hey, of this Yahoodi was Sausage. ये मैंने किया नहीं था. So I had to do it. Episode 11 Yahoodi guys. sausage. Oh yeah. Oh God, यार. तो पता है ना कि there are people who there are people who. This was fun, yeah. Yeah. नहीं, मैं कहता कि I mean Yehudi sausage तो ना को there are already people who think हम Illuminati हैं. इसलिए तो इसकी तो कि उसके हम कवर पे भी लुमिनाटी वाली आंख है on a sausage. यही लोग कहते हैं कि I'm telling you, it's on the sausage. जिसको समझ आई आई, जिसको नहीं आई नहीं आई. you can pretty much fade out on this. इधर fade मार देना.